I wanted to put down definitions by yourself, okay, based on your common properties associated with wave students and simple definitions related to it students. The first one which I want will be amplitude. Then I want path length. Students, did I do transverse and longitudinal power difference? Students? No sir. आपने सिर्फ बताया था कि ट्रांसवर्स क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल क्या होता है. In first students, I wanted to go for difference between transverse and longitudinal. What about progressive wave? I told you about progressive wave students and standing waves. Students, did I tell you about progressive wave and standing wave? नहीं sir. So, and I told you about transverse and longitudinal. Did I do classification of wave students? Yes sir. Then in that I must have told you elastic, mechanical, non-elastic, or non-mechanical. हाँ sir, वो होता. And then after that, under elastic, I must have given you progressive wave and stationary waves. Yes, right. And under progressive wave, then I told you longitudinal waves and transverse waves. Yes. And I told you about characteristics of progressive wave. No sir. I didn't tell you about that. Conditions requires for a wave to be progressive. नहीं बताया मैंने. The medium should possess elasticity. There should be elasticity in the medium. The medium should offer inertia. The resistance offered to the propagation of wave should be very small. I must have given you an example of what do you call waves which are violent. अगर waves कहाँ पे violent है तो उनको अगर शांत करना है तो oil has been put inside it. ये सब नहीं बताया तुम लोगों को. नहीं सर बताया. So these are the characteristics. सर And लिख the के तो आपने कुछ दिया नहीं था. ये अच्छा, सर आपने जो बोला. right. Please, students, please put down characteristics of progressive wave. All of you, please write down characteristics of progressive wave. Okay. Okay. First, write down all vibrating particles. Students, hope the audio and video is fine with all of you all. Is it clear, audio and video? Yes sir. Okay. All vibrating particles of the medium. Please put down the first point. All vibrating particles of the medium have same amplitude
have same amplitude, same period, same amplitude, same period, and same frequency. I repeat, all vibrating particles of the medium have same amplitude, comma, same period, and same frequency. Next point, write down. Next point, write down. The state of oscillation. The state of oscillation of particles is same. The state of oscillation of particle is same. Students, अगर किसी ने पूछा state of oscillation का मतलब state of vibration of the particle is the same. State of oscillation of the particle is the same. Next point, write down. The medium should offer inertia and should be elastic. The medium should offer inertia and should be elastic. And the last point you can put down. Hope students, you all are writing it. Don't go to sleep. Students, are you writing it? Yes, sir. The last, put on the last point. The resistance offered to the propagation of wave the resistance offered to the propagation of wave in a given medium should be small. The resistance offered to the propagation of wave by the medium should be small. By the medium should be small. Full stop, continue. Thus, the energy is said to propagate. Thus, the energy is said to propagate in forward direction. Thus, the energy is said to propagate in forward direction.
Just can anyone speak it out? Parth, are you there, Parth? Can you speak out the points again? Fast. Parth, are you there? Richa, can you speak out? Rajesh, can you pick up? Can you tell me? Yes, sir. Yeah, Characteristics of progressive wave. All yeah. vibrating particle of a medium have same amplitude, same period, and same frequency. The state of oscillation of particles is same. The medium should offer inertia and it should be elastic. The resistance offered to the propagation of wave by the medium should be same. It should be small. Should be small. Sorry. Thus, the energy is said to propagate in forward direction. Very good, Rajesh. Thanks a lot, Rajesh. See, students, there are certain samples inside the classroom like Richa and Parth who are just sitting idle. You know, they are of no use in the classroom. Let me put them into waiting room then. Go back into the waiting room. If you don't answer, you are into the waiting room back. Because this is not the way to do studies. Okay, students. Next, write down stationary waves. Students, then write down stationary waves. Write down the point under stationary waves. Write down a stationary wave. A stationary wave is a waveform. A stationary wave is a waveform. Stationary wave is a waveform. Waveform, huh? FORM, in which the energy, in which the energy, in which the energy of the wave, in which the energy of the wave, in which the energy of the wave is confined, is confined. CONFINED, confined, is confined, is confined between two rigid ends, is confined between two rigid ends, is confined between two rigid ends, called, called, please put down over here, called nodes, NODES, called nodes, full stop, continue. Thus, the energy not even propagates in the forward direction. Thus, the energy does not propagate in forward direction. Thus, the energy does not propagate in forward direction.
Thus, the energy does not propagate in forward direction, nor even in backward direction. Thus, the energy does not propagate in forward direction, nor in backward direction. Below it, you can give an example. Example, since below this, you can write an example. String of a guitar when struck. String of a guitar when struck. Students, ये string of a guitar है और उसको अगर तुमने center से pluck किया, इसको ऐसे jerk किया, तो what happens? It will move up and down. It forms a loop. Am I getting it? So example में क्या लिखोगे? String of a guitar when struck. उसके नीचे उसके diagram लिख करोगे ना, तो यहाँ पे एक particle को लिखना. The first particle is at the center. ये second particle. ये third particle. यहाँ पे fourth होगा और fifth होगा. यहाँ पे form होता है antinode और यहाँ पे form होता है node. N stands for node. Just draw this diagram. Hope it's clear. The particle in the center, particle on either side, 2, 3, 4, and 5. So is the diagram clear to all of you all? Yes. Yes, Tarang. Can you speak out, Tarang? Tarang, can you speak out the point which I gave you right now? Tarang, are you there? Yes, sir. I'm. Yeah, can you speak out the point? Yes, sir. A Bolo. stationary wave is a waveform in which the energy of the wave is confined between the two reject ends called nodes. Thus, the energy does not propagate in forward direction nor in the backward direction. Absolutely correct. Absolutely correct. Example मैंने क्या दिया है? Example के लिए मैंने क्या बोला था? A string of a guitar. A string of Guitar it. मतलब? Yes. हाँ, a string of a guitar when struck. वो example लिखना. और ये diagram. स्टूडेंट्स को अब सिंपल एग्जांपल, तुम शायद कभी स्कूल लाइफ में किया होगा, एक कंपास बॉक्स लिया होगा, फिर एक रबर बैंड स्ट्रेच किया होगा, दोनों साइड इरेजर रखा होगा और फिर उसको प्लग किया होगा और आवाज सुनते रहे, तो वो स्टैंडिंग वेव्स हो गए. जहाँ पे तुम लोग ने होल्ड करके रखा है, जो जो रबर इरेजर्स रखा है, शार्पनर्स रखा था, वो दो एंड्स क्या बन जाते हैं? रेजिडेंट्स. यानी वेव फॉर्म जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, वो हिट हो रहा है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. Are you getting it? So the waveform moves in the forward direction, gets reflected back, and is confined between the 2 points. Okay, these are the rigid ends. जहाँ पे भी rigid ends होगा, वहाँ पे क्या form होता है? Nodes. Rigid ends में क्या form होगा? Nodes. Center में क्या form हुआ है? Antinode. यानी अगर किसी ने पूछा, nodes are the region जहाँ पे energy is 0. Antinodes are the region where the energy is maximum. Is a diagram drawn, students? Is a diagram drawn? Yes, sir. Okay. So, Richa and Parth, are you all back in? I've taken you back. Can you unmute? Again, you want to go out?
If you all don't reply, you all are out of the lectures. It seems you all are not in the lectures. Since below this point, write down. Below the same under the heading of standing stationary wave, students. Below that, the next point, write down, students. In a standing wave for a given loop. In a standing wave for a given loop. In a standing wave for a given loop. The energy of particle midway of the loop is maximum. The energy of particle midway is maximum. The energy of particle midway is maximum. The energy of particle midway is maximum since amplitude is maximum. Since amplitude is maximum. Amplitude is maximum. This region is called antinode. This region is called antinode. Capital A. This region is called antinode. Students, are you all getting it? All of you all? Yani, agar standing waves में, if I happen to consider for a given loop, at the midway, जो particles होते हैं, उनकी energy सबसे ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि उनकी amplitude सबसे ज़्यादा है. और उस region को हम क्या बोलेंगे? Antinode. तो अगर किसी ने पूछा antinode होते क्या है, तो तुम्हें ये बोलना है particles vibrating with maximum amplitude. Particles vibrating with maximum amplitude is called antinodes. अभी देखो, if you go on right hand side and left hand side, what happens to the energy? देखो ना, amplitude कम हो रहा है, amplitude कम होगा. अगर मैं और particle यहाँ पे लूंगा तो और amplitude कम होगा. Suppose अगर इसको मैंने fourth ले लिया, इसको fifth ले लिया, इसको sixth ले लिया, तो energy 1 का सबसे ज्यादा है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 and 6 तो 0 हो गया. Okay? लेकिन सारे particles vibrate with same period. Okay? Next point. Same under this only. Next point. At rigid ends, at rigid ends, energy of particle is minimum. Energy of particle is minimum. Thus called node. Thus called node. N-O-D-E. Thus called node.
Next point. For a given loop in a standing wave. Next point, Radhan. For a given loop in a standing wave, for a given loop in a standing wave, all the particles in that loop, all the particles in that loop, all the particles in that loop have, all the particles in that loop have constant time period of oscillation, have constant time period of oscillation. यानी जितना टाइम इसने लिया है एक ऑसिलेशन के लिए उतना ही टाइम ये पार्टिकल भी लेगा, उतना ही टाइम ये पार्टिकल भी लेगा. Have constant time period of oscillation. Have constant time period of oscillation. Last point right on. The amplitude of particle 1 is maximum. The amplitude of particle 1 is maximum. Thus, energy maximum. The amplitude of particle 1 maximum, thus energy maximum. Thus, energy maximum, full stop. Thus, energy maximum, full stop. Continue. But for particle 2, 3, and so on, energy goes on decreasing. But for particle 2, 3, and so on, amplitude decreases. For particle 2, 3, and so on, amplitude decreases. And thus energy decreases. Particle 2, 3, energy, amplitude decreases, thus energy decreases. Full stop. Continue. Finally, particle 5 and 6 will have minimum amplitude. Therefore, energy 0. Particle 5 and 6 has a minimum amplitude, thus energy is 0. Thus, particle 5 and 6 has minimum amplitude, thus energy is 0. Hope students, the points of antinodes, sorry, the points of stationary waves are clear. Richa, can you give an answer? Richa Salia, 11th HIT. Again, I'm asking you for the last time. Was when I texted, no reply, no response from you. So it seems you're not there in the lectures. If you now don't reply, I'm going to remove you. Parth. Yes, Richa. Particles vibrating with maximum amplitude are called antinode.
antinode. This Yes. region is called antinode. At rigid ends, in energy of particles is minimum. Minimum is thus called node. For a given Absolutely. For a given loop in a standing wave, all the particles in that loop have constant time period of oscillation. Very The good. amplitude of particle 1 is maximum, thus energy maximum, but for particle 2, 3, and so on, amplitude decreases and thus energy decreases. Finally, particle 5 and 6 has minimum amplitude, thus energy is zero. क्या बात है, तो ऋचा पहला आंसर क्यों नहीं दे रहे थे? Sir, ऋचा, I was in the washroom and first and second अरे तो time टेक्स्ट कर my देते यार, throat was not okay. अरे तो टेक्स्ट कर देते। कब से चिल्ला रहा हूँ, कब से पूछ रहा हूँ, टेक्स्ट भी किया कि भाई तुम लेक्चर में हो कि नहीं हो, तो एक टेक्स्ट कर देते करके, डजंट मैटर, यू कुड हैव टोल्ड योर मॉम और डैड कि जस्ट टेक्स्ट इन के दिस इज द, इट्स फाइन, डजंट मैटर। Okay, sir. Okay, don't do like that. एक टेक्स्ट कर दो स्टूडेंट्स, if in case if you're not on your seat in that case, you should. But I'm happy that you gave an answer. Good. Thank you, Good. sir. The way she has given answer. Okay, that means students know the answers. Very good. बोलते नहीं है लेकिन ऐसा थोड़ा बहुत आंसर्स आते हैं। Okay, students. So I told you about nodes and antinodes का concept. I made it very clear, students, and I told you about progressive wave and standing waves का concept, students. Do keep this in mind whenever you are learning about the two kinds of wave motion, students. So I've done the classification, students, where I've told you about elastic, inelastic we consider, non-elastic we consider. I told you about progressive wave and I told you about standing waves also. Is that clear? Now we go with respect to your longitudinal waves and transverse wave, students. Before going for longitudinal waves and transverse wave, students, I need to ask you certain short definitions, students. Hope you get those definitions very clear. Students, if in case if I happen to speak about, uh, in short, I'll try to put forward the diagram also, students. अगर मैं diagram do, students, listen carefully. So I'll try to go with respect to transverse wave, students. Okay. I'll put it over here as transverse wave. Now, when I speak about transverse wave, this is how the diagram goes. This is your horizontal x-axis, students, और ये vertical y-axis है, ये origin हो गया। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, students? Particle जो होता है, वो oscillate कर रहा है y-axis पे। ये जो particle है, वो oscillate कर रहा है y-axis पे। It's like this. ये इसकी amplitude है, students. This is the amplitude of oscillating particle. This is plus A and this is minus A. So we are trying to go for certain definitions, students, यहाँ पे। And students, particle oscillate कर रहा है to and fro. लेकिन अगर ध्यान से सुना, इसी को अगर मैं magnifying glass से देखूं, students, अगर मैंने इसको magnifying glass से देखा, तो यही wave form हम ऐसे draw करते हैं। Students, do keep this in mind. यानी तुम्हारा जो wave form है वो ऐसे होता है, students. This is how the wave form goes. Okay, so your waveform moves in the forward direction, and these are all in form of curves, students. These are all in form of curves. Sinusoidal wave, ये sine wave मैंने बताया है, students. यानी तुम्हारा जो particle है, students, तुम्हारा जो particle है, वो oscillate कर रहा है। ध्यान से देखना, students. Particle oscillates on y-axis. ये ध्यान में रखना, students. Particle जो है वो oscillate करता है y-axis. Wave
और एनर्जी वो प्रोपोगेट करती है along x axis. समझ में आ रहा है? वेव प्रोपोगेट करती है along x axis स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पे तुम देखोगे ट्रांसवर्स वेव में स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा वेव और एनर्जी एक्स एक्सिस पे होगा, लेकिन तुम्हारा जो पार्टिकल होगा वो हो जाएगा वाई एक्सिस पे। और दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें हाथ में एक स्ट्रिंग दिया और सामने एक रिजिड सपोर्ट है, वॉल है, वॉल के अंदर हुक लगा हुआ है, और फिर तुमने रोप को पकड़ा है, स्ट्रिंग को पकड़ा, फिर तुमने उसको जर्क किया, तो कहने से I'm going to get a wave form. Yes, ये कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है, जहां पे पार्टिकल्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से। ये मीन पोजीशन स्टूडेंट्स, ये जो रेडिंग है एक्स एक्सिस पे वो मीन पोजीशन है, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अगर यहाँ पे तुम देखोगे डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस, ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस अगर तुम देखोगे तो इसको हम बोलेंगे ट्वाइस एम्पलीट्यूड। और ये जो ट्वाइस एम्पलीट्यूड है उसको क्या नाम देते हैं? पाथ लेंथ। स्टूडेंट्स उसको क्या बोलेंगे? पाथ लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ। ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स ये जो एक्स एक्सिस है आई कैन कॉल दिस मीन पोजीशन। अगर तुम यहाँ पे पार्टिकल को देखोगे, यहाँ पे भी तुम देखोगे तो ये सारे जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स, वी कैन कंसीडर देम टू बी द पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। यहाँ पे मीन पोजीशन पे, यहाँ पे तुम आते हो तो पार्टिकल एक्सट्रीम पे चला गया, वापस मीन पे आया, वापस पार्टिकल एक्सट्रीम पे चला गया, वापस मीन पे आया, वापस एक्सट्रीम पे चला गया। यानी ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। दिस इज हाउ द पार्टिकल है स्टूडेंट्स। ये है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और ये क्या है? पोजीशन ऑफ द वेव। दिस इज हाउ यू कैन कंसीडर स्टूडेंट्स। नाउ व्हेन आई डिवाइड दिस पर्टिकुलर वेव फॉर्म इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो यहाँ का टाइम पीरियड t/4 हो जाएगा, ये जो टाइम पीरियड है t/2 हो जाएगा, ये जो टाइम पीरियड है 3t/4 होगा, और ये कैपिटल T। यानी स्टूडेंट्स अगर तुम एक पूरा ऑसिलेशन लेते हो ना, एक पूरा, इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन, जिसको मैं नाम दूंगा वन वेव, जिसको मैं बोलूंगा वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। तो इसको कितना टाइम लगता है ये वेव को कंप्लीट करने के लिए? जब ये पार्टिकल एक ऑसिलेशन करता है, वेव आगे की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ पे जो टाइम लेते हैं वो पीरियोडिक होता है। क्या होता है? पीरियोडिक। वेव जो डिस्टेंस कवर करेगा ना स्टूडेंट्स, वो हो जाता है वेवलेंथ, जिसको हम बोलते हैं लैम्बडा। गेटिंग इट? यानी यहां से यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हो जाता है लैम्बडा, और टाइम कितना होता है? पीरियोडिक। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? इज दिस मच क्लियर? Yes, sir. Okay, so now if I want to write in terms of time period, मैंने इसको 4 parts में डिवाइड किया। Now if I want to write in wavelength, I can divide this also into 4 parts. यहाँ से यहाँ पे मैं लिखूंगा λ/4, λ/2, 3 λ/4 एंड लैम्बडा। डजंट मैटर, आगे भी तुम कंटिन्यू कर सकते हो। यानी कैसे डिवाइड करना मालूम है? 1 लैम्बडा 1 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4। ये क्या हो जाएगा? 5 λ/4। ये क्या हो जाएगा? 6 λ/4 एंड सो ऑन। टाइम पीरियड में देखो, 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4। ये क्या हो जाएगा? 5t/4। ये हो जाएगा 6t/4 एंड सो ऑन।
एग्रीड? लेकिन ये कौन सा वेव फॉर्म हुआ? ट्रांसवर्स वेव। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एग्रीड? Yes. लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में कैसे होता है स्टूडेंट्स? लॉन्जिट्यूडनल वेव में यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं एक्स एक्सिस पे और वेव भी प्रोपोगेट करता है एक्स एक्सिस पे। यानी दोनों क्या है? पैरेलल है। यहाँ पे क्या है? बोथ आर पैरेलल। या तो तुम पार्टिकल को वाई एक्सिस पे लो स्टूडेंट्स। अगर तुमने पार्टिकल को वाई एक्सिस पे लिया स्टूडेंट्स, पार्टिकल को अगर तुमने वाई एक्सिस पे लिया तो वेव भी वाई एक्सिस पे होगा, दोनों पैरेलल होंगे। इसका मतलब हाउ डू यू डू स्टूडेंट्स? जब भी तुम वेव फॉर्म देखोगे ना लॉन्जिट्यूड वेव का, तो बेस्ट एग्जांपल तुम देखो ट्यूनिंग फोर्क का स्टूडेंट्स। शायद तुमने 10th स्टैंडर्ड में ऐसा डायग्राम देखा होगा ट्यूनिंग फोर्क का। ये एक स्टील का मेटल का यू शेप्ड ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। इसको हम बोलते हैं स्टेम ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क। इसको बोलते हैं प्रॉन्ग्स, PRONG। तुम क्या करो मालूम है? ये ट्यूनिंग फोर्क को लो और फिर एक रबर पैड लो और रबर पैड के ऊपर जोर से स्ट्राइक करो, सो द prongs will vibrate, they'll go on vibrating। यानी जो prongs है स्टूडेंट्स, prongs अगर बाहर की तरफ चले गए तो तो एयर मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे। अगर prongs थोड़े से अंदर की तरफ आएंगे तो एयर मॉलिक्यूल्स गोज अवे। यानी ये क्या हो रहा है मालूम है? ये prongs आगे पीछे हो रहा है स्टूडेंट्स। यानी prongs वाइब्रेट कर रहे हैं अपने जगह पे। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है? यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे कंप्रेशंस, फिर वापस मिलेंगे रेरिफैक्शन, फिर वापस मिलेंगे कंप्रेशंस। यानी ये जो रीजन है वो कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन। C stands for compression. What does R stands for? Rarefaction। So, यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे एक क्रेस्ट और एक तरफ एक वेव है, तो यहाँ पे क्या होगा? One oscillation is equal to one wave, and that is equal to one compression and one rarefaction। अगर यहाँ पे वन क्रेस्ट स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे वन क्रेस्ट और वन ट्रफ बना के एक वेव होता है, यहाँ पे वन ऑसिलेशन वन वेव इज कॉल्ड एज वन कंप्रेशन एंड वन रेरिफैक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? Yes. This is how the waveform moves. I want you to draw both these diagrams right now students, all of you all. I'm giving you all 3 minutes for it. Students, hope the diagram is clear. Huh, students? Is the audio and video fine with all of you students? Can you see the diagram properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Everything. sir. Okay, fine. So please put it down.
I told you please see to it that lambda by 4, t by 4 साथ में होना चाहिए, ये साथ में होना चाहिए और ये भी साथ में होना चाहिए. Don't draw anyhow. Draw it properly. थोड़ा सा बड़ा diagram बनाना students. And use proper pencil and scales. स्टूडेंट्स ये चैप्टर में कुछ ओमिटेड है स्टूडेंट्स? तुम्हें बताया गया है कॉलेज से? हाँ रिया, कैन यू टेल मी रिया? I'll just check. प्राची, whoever it is. ये कंप्लीट करने के बाद में प्लीज टेल मी if anything is omitted in this. Yes, friends, can I erase it now? Yes, sir. So one. Students, do keep in mind when you're looking into it. अगर मैंने किसी को पूछा कि ये जो लॉजिकल वेव है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुम वेवलेंथ कैसे दिखाओगे, टाइम पीरियड कैसे दिखाओगे स्टूडेंट्स? क्योंकि ये क्रेस्ट और ट्रफ है. आई गेटिंग इट? तो अगर तुम सपोज, अगर मैं देखो मैंने क्रेस्ट भी ड्रॉ किया था, देखो 1 2 3 4 5 6 अप्रोक्सीमेटली 6 लाइंस लिया है. रेफ्रैक्शन में भी 1 2 3 4 5 6 लाइनें लिए, लेकिन 6 को स्कैटर कर दिया. इट्स लाइक दैट.
अनइवननेस नहीं होना चाहिए। अगर सपोज मैंने यहाँ पे थर्ड लाइन लिया है तो यहाँ पे 1 2 3 थर्ड लाइन, ये हुआ मेरा वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, ये थर्ड लाइन, नॉट दिस थर्ड लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट 1 2 3, ये वाला, ये हो जाएगा मेरा वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, या सपोज अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 1 2 3 ये वाला, और यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 2 3, तो ये डिस्टेंस तुम्हें सेम मिलेगा, ये वेवलेंथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नाउ आई वांट यू टू मार्क दिस आल्सो properly. Distance between two consecutive crests या two consecutive compressions या two consecutive rarefactions is called as wavelength. इसी को जो टाइम मिलता है वो periodic होगा, टाइम इज periodic. Friends, क्या ये क्लियर हुआ? लैम्बडा और टी? हाँ स्टूडेंट्स, distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefactions is called as wavelength. Now a student will say, sir, अगर distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefaction is wavelength, can I say distance between a compression and rarefaction is also a wavelength? Why not? यानी तुम यहाँ से फर्स्ट लाइन और यहाँ की 12th लाइन का डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होगा. So one crest, one trough is one wave, one wavelength. One compression, one rarefaction is also one wavelength. Students, क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Please, it's not only, I'm not only teaching Ria, please, I'm teaching others also. Parth, is it clear? Nayan, is it clear? Nayan Prajapati. Yes, sir. Yes. Parth, you're not speaking. Yes, You sir. have Yes, sir. fine. Ayan, Dakshraj, Devesh, Dakshraj, Devesh, Dharya, Yes, sir. Harsh, Yes, sir. Mahek, Krishna, Vivek, Vishal, Vedant, Yes, sir. Samir, Shubham Gupta, Yes, sir. कृष्णा ने आवाज नहीं दी. समीर, you said it. Samir, are you there? Krishna, are you there? Krishna, unmute yourself. Yes, sir. Yeah, you are getting it? Yes, sir. Okay. Can I erase it now, students? Yes, sir. Okay. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स में पार्टिकल्स और वेव दोनों परपेंडिकुलर है. यहाँ पे पार्टिकल्स और वेव दोनों पैरेलल है, आगे पीछे हो रहा है. वेव आगे जा रहा है, पार्टिकल उधर ही ऑसिलेट कर रहा है स्टूडेंट्स. तो ये लॉन्जिट्यूड होगा और ये ट्रांसवर्स होगा. Okay, students. Now, can you tell me what are the definitions, students?
Okay. Please put down definitions into your books. और अभी इसके definitions मुझे चाहिए तुम्हारे पास से students. I wanted to write the definitions by yourself. Okay. Horizontally लिखना students सारे terms. Okay. Hello, sir. Yes. So can you hear me? Yeah, you. सर आपने वो deleted portion पूछा था ना? हाँ. So common properties of all waves वो 8.2. अच्छा वो पूरा deleted है. Yeah, वो deleted है and then transverse waves और longitudinal waves. फिर principle of superposition of एक सेकंड phase और phase difference भी omitted है. हाँ सर वो शुभम आचार्य है ना उसने मुझे एक लिस्ट भेजी थी सारे डिलीटेड पोर्शन की तो उसमें तो दिया हुआ है क्या बोल रहे हो? वो हमारे क्लास में जो शुभम है ना हाँ. उसने मुझे वो लिस्ट भेजी थी वो डिलीटेड पोर्शन की तो उसमें तो ये सब इंक्लूड है मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल वेव्स और ये सब Included है कि deleted है? Included है या deleted है? डिलीटेड है सर अच्छा तो phase and phase difference is also deleted. सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वो डिलीटेड है और फिर उसके बाद रिवर्बरेशन acoustics और लिसनर approaching a stationary source with velocity v. Common properties of all waves is deleted. No, you are saying it. Yes, yes. So that is, yani, it's only up on page number 142 or things on page number 143 and 144 is also omitted. So यहाँ पे तो पूरा 8.2 मतलब 142, 143 और 144 वो दिखा रहे हैं. अच्छा और फिर 145 ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स वो भी कैंसिल दिखा रहा है. लेकिन longitudinal wave 145 पे है वो भी कैंसिल है. Yes, 8.3. अरे बाप रे. और फिर 8.4 नहीं सर 8.4 है. progressive wave expression for a wave. हाँ? और उसके बाद 8.6 डायरेक्टली. एक मिनट फिर 8.6 8.6 पूरा कैंसिल है. Yes. और 8.7 नहीं 8.7.2. 8.7.1 है. हाँ 1 है और 2 और 3 कैंसिल है. 2 और 3 कैंसिल है. थियोरेटिकल कैंसिल है. अच्छा लेकिन व्हाट अबाउट एप्लीकेशंस पेज नंबर 151 पे और 8.8 151 पे एप्लीकेशंस है ना सोनार के मेडिकल एप्लीकेशन एकॉस्टिक्स के वो कैंसिल है ना. Yes sir. अरे बाप रे बहुत कैंसिल है. और 8.9.2. हाँ वो बाद में 8.9.2. बताना. वो बाद में बताना जब मैं वहाँ पे आऊंगा तभी Okay. बताना. आई एम गेटिंग कंफ्यूज नाउ. Okay sir. लेकिन students according to me I don't know about it when if you're cancelling all these things then how you are going to do your 12th standard wave motion because when are your colleges reopening? From Monday they are reopening. Has Yes, any sir. news come from college? नहीं सर अभी एग्जाम्स चल रहे हैं ना अभी तक खत्म नहीं हुए. So they are all online only going on exams. या ऑनलाइन. So today you have a paper. सर मेरा नहीं है आई गेस CS IT उनका. मतलब ये किसने मेरे को फोटो भेजा? कौन है भाई? Bhatia, I'm in lectures.
Okay, students. Then one thing, no need to put on. लेकिन ये definitions, students, you should know the definitions. यार, without definitions, you will not be able to crack it. क्योंकि आगे जाके जो तुम्हें, अगर मैं suppose मैं what do you call it, intensity of sound, pitch, quality, and तो वहाँ पे amplitude और frequency वगैरह आएगा students. और एक concept of phase भी ध्यान में रखने की जरूरत है students. ये कुछ 3-4 चीजें will do it students because that will help you out. Students, then I've told you to write down definitions. Just put down this definition. Let's see how many of you can write down the answer. एक तो amplitude मुझे चाहिए. अभी हम ये limitations में करेंगे. ये है omitted, लेकिन इसकी जरूरत गिरेगी students आगे पढ़ाई के लिए भी. You can't just neglect it. फिर दूसरा मेरे को चाहिए path length. फिर इसके बाद में मैं बोलूँगा time period. का मतलब क्या है? मैं बोलूँगा frequency, wavelength. और ये तुम लोगों को क्यों कट किया गया मालूम है? क्योंकि ये सारे तुम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में किया हुआ है, इसलिए कट किया है स्टूडेंट्स. यानी उनको पता है, कॉलेज वाले को पता है कि ये कोई भी स्टूडेंट को आएगा जरूर. स्टूडेंट्स कट डाउन किया हुआ चीजें यानी कहाँ पे थियोरेटिकल हो गई, लेकिन कहाँ पे जो बेसिक्स उसका यूज होगा, तो यू हैव डन इट इन लोअर स्टैंडर्ड्स. So these are the definitions: amplitude, path length, time period, frequency, wavelength, wave velocity. Wave velocity. And next concept I wanted for phase. इसको हम pronounce करते हैं phi, which is always measured in radians. Can you tell me, students, what exactly these all definitions speaks about? Anyone can tell me? Amplitude का मतलब क्या है? सबसे पहले yes, students, can you tell me what is amplitude? अभी मैंने बता दिया ना डायग्राम में. Amplitude is the greatest distance that the wave moves, like up and यानी down. अगर मैंने ये mean position लिया है, अगर ये mean position लिया है, तो ये होगा maximum displacement. यहाँ पे भी maximum displacement. Maximum displacement of a particle from its mean position. जिसको हम बोलते हैं प्लस है और माइनस है. So क्या बोलोगे? एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल. मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड. और इसका यूनिट क्या होगा? हमेशा मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में होगा. पाथ लेंथ का मतलब क्या हुआ? फ्रेंड्स, ये होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशंस, डिस्टेंस बिटवीन two extremes. That is twice amplitude. Since distance between two extremes is called as path length, twice amplitude. Students, अभी ये मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ, पूरा एकदम बराबर पूरा डेफिनेशन जैसे नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ. डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ. ये भी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में होगा. स्टूडेंट्स, क्या ये दोनों क्लियर हुआ? एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन. अगर तुम लॉन्जिट्यूडल वे में भी करते हो तो पार्टिकल्स अपने जगह से कितना डिस्प्लेस हुए फ्रॉम मेन पोजीशन, सो दैट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड. लेकिन ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, ईदर साइड वी कैन कंसीडर, यानी ऊपर की तरफ अगर मैंने इसको ओरिजिन ले लिया स्टूडेंट्स, तो ये ऊपर की तरफ प्लस ही होगा और ये माइनस है, क्योंकि इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सिस और इसको मैं बोलूंगा नेगेटिव एक्सिस. क्या ये दोनों क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एम्पलीट्यूड और पाथ लेंथ. Yes, sir.
It's only one student is understanding. What about the rest of the students? Are you all there inside the lectures or not? She's only saying it yes. बाकी कोई parents सुन नहीं रहे कि क्या है? Your kids are not responding, parents. If the mics are on, please, parents, listen carefully. Your kids are not responding at all. They're not responding. And since they are not responding, that means they are in headphones. They're using headphones, earplugs, they're using it so that the parents do not hear the voice of mine. Very few students will be there without headphones. And if they're without headphones, they must have kept the room shut. They don't want the parents to enter inside that particular room. T stands for time period. What exactly time period of oscillation, students? Anybody can tell me what is time period? It is? Students, अगर जब भी मैंने ट्रांसवर्स वेव लिया स्टूडेंट्स, तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, एक कंप्रेशन और एक रेरिफैक्शन. So time taken for one wave. Since time taken by a particle to complete one oscillation. यानी जब भी पार्टिकल, ध्यान से सुना, जब भी पार्टिकल यहाँ से शुरू करता है, यहाँ पे मैं स्टॉप वॉच को चालू करूंगा, फिर पार्टिकल एक्सट्रीम पे जाएगा, वापस मीन पे आएगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे आएगा और फिर यहाँ पे आएगा, तो मैं स्टॉप वॉच को बंद करूंगा. वो क्या हो जाएगा? पीरियोडिक टाइम, मेजर इन सेकेंड. Since time taken by a particle to complete one oscillation, time for one oscillation. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? वन ऑसिलेशन का मतलब वन क्रेस्ट वन ट्रफ. अगर पार्टिकल ऑसिलेट करता है, एक कंप्रेशन और एक रेरिफैक्शन, व्हाट इज द टाइम टेकन? इट्स पीरियोडिक. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड. Yes. इट इज ऑलवेज इन सेकंड स्टूडेंट्स, ऑलवेज इन सेकंड्स. फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का स्टूडेंट्स मतलब क्या? मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. तो देखो, इसका मैं यूनिट लिखूंगा तो अलग अलग यूनिट्स आएंगे स्टूडेंट्स. इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस per unit time, यानी per seconds, number of vibrations per second, number of cycles per second, number of revolutions per second, number of rotations per second, or frequency is reciprocal of time, therefore it is either second inverse or simply hertz. इसके dimensions क्या हो गए? m raised to 0, l raised to 0, t raised to -1. और मैं पूछ चुका हूँ, अगर dimensions मैंने किया होगा तो मैंने पूछा होगा. Students, frequency is simply number of oscillations per unit time. अब मुझे ये बताओ, ऊपर वाले डायग्राम देखो. तो ये देखो, ये दोनों डायग्राम देखो. जब भी मैंने बोला पार्टिकल यहाँ से ऑसिलेट करता है, मैं स्टॉप वॉच चालू करूंगा, फिर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, मीन पे जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम वापस यहाँ पे आएगा, तो इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन. तो यहाँ पे मैं शुरू करूंगा, यहाँ पे मैं खत्म करूंगा, तो वो मुझे क्या मिलेगा? टाइम पीरियड. एग्रीड? So now if in case if I happen to consider for time period t, students, for time period t, students, how many oscillations are there? How many oscillations? One oscillation. Since in time period t, the waveform is giving you how many oscillations? One oscillation. समझ में आ रहा है? So frequency is reciprocal of time, 1 by t. Second inverse or simply hertz. इसके दूसरे units क्या होगा? ध्यान से सुनना. Oscillations per second, vibrations per second, cycles per second, revolutions per second, rotations per second, या तुम also बोल सकते हो ripples per second, या simply second inverse or hertz. That is frequency. ये सारे यूनिट्स ध्यान में रखना जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. एग्रीड? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो CPS का क्या बोला आपने? साइकिल्स per second. Okay. Then wavelength. What is the wavelength we consider is? If I try to clear one wave, this is one wave. Students, distance covered by a wave. Distance covered by wave
when particle completes one oscillation. Agreed? So it's distance covered by the wave when the particle completes one oscillation. Agreed is called wavelength. ये है. Answers to students. Distance covered by a wave when a particle complete one oscillation. एक oscillation में जो distance cover होगा वो wavelength होगा. एक crest और एक compression एक refraction के लिए जो distance cover होगा वो wavelength होगा. And this wavelength is always either in meter और in centimeter. इसका यूनिट है हर्ट्ज. देखो सबका यूनिट्स भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. इसका यूनिट है सेकंड. इसका होगा मीटर और सेंटीमीटर. ये भी होगा मीटर और सेंटीमीटर. वेव वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर सेकंड इनवर्स. फेस इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियंस. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? वेवलेंथ. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. नाउ वेव वेलोसिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? वेव वेलोसिटी इज सिंपल स्टूडेंट्स. जब भी तुम लोग ने काइनेमैटिक्स पढ़ा होगा तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी इज द रेट एट व्हिच डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस. So wave velocity का मतलब क्या है? It's a displacement covered by the wave per unit time or the distance covered by a wave per unit time. Friends, wave velocity is defined as distance covered by the wave per unit time. है ना? यानी अगर तुम्हारा टाइम पीरियोडिक है तो तुम्हारा टाइम अगर पीरियोडिक है, पीरियोडिक का मतलब वन ऑसिलेशन, तो उसके लिए कितना डिस्टेंस कवर कर दिया? वेवलेंथ की है ना. ये देखो ना, ये एक ऑसिलेशन है, उसको टाइम पीरियड टी लिखा है, तो वो एक ऑसिलेशन का व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इज आल्सो लैम्डा. व्हाट इज वेव वेलोसिटी? वेव वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, lambda upon t. But what is 1 upon t? What is 1 upon t, students? Frequency. Therefore, can I say v is equal to f lambda? How is frequency and wavelength यहाँ पे students? Frequency and wavelength inversely proportional होगा. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा इनवर्स होगा. वेलोसिटी किस में मेजर करते हो? मीटर पर सेकंड में. फ्रीक्वेंसी किस में मेजर करोगे? हर्ट्ज में. वेवलेंथ किस में मेजर करोगे? मीटर में. सबके एमकेएस यूनिट दिया. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हुआ. Wave velocity is defined as a distance covered by a wave in given time. तो अगर पार्टिकल एक ऑसिलेशन करता है, उसी टाइम में वेव हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो टाइम पीरियड कैपिटल टी में वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया? वेवलेंथ कवर किया. तो लैम्डा अपॉन टी, व्हाट इज 1 अपॉन टी? इज फ्रीक्वेंसी. दैट इज वेव वेलोसिटी. हाउ इज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल? अभी इसी का अगर मैं इलस्ट्रेशन यहाँ पे दे दूं स्टूडेंट्स, ना प्लीज पे अटेंशन. अगर यहाँ पे मैं दे दूं तो मैं फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ स्टूडेंट्स हैज इनवर्स वेरिएशन. ओके, तो एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुम लोगों को. हाउ डू वी अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इसको समझने के लिए, और ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टूडेंट्स. जो डिलीटेड किया है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. और उसके बगैर तुम्हारा 12th का चैप्टर भी इनकम्प्लीट होगा. तुम 12th स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो कुछ नहीं आएगा. 11th वाले बोलेंगे, 12th के टीचर बोलेंगे कि 11th में सिखाया है तुम लोग को. ऑफ कोर्स आई टेक इट इन 12th, लेकिन मैं बोल दूंगा भाई तुम लोगों ने सब पढ़ा है 11th में, और तुम बोलोगे हमारा कट डाउन था सिलेबस. तो स्टूडेंट्स कट डाउन है, लेकिन तुम्हें कट डाउन नहीं करना है. कहाँ का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यू नीड टू डू इट. अभी स्टूडेंट्स मैं एक दो वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ. दोनों ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ बोथ ट्रांसवर्स वेव.
अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और अगर मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स, पहले वाला वेव देखो, पहले वाले वेव के लिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ओके, ये प्लस है और ये माइनस है ना, ये टाइम पीरियड कैपिटल टी होगा, वेवलेंथ लैम्बडा, एग्रीड। दूसरे के लिए मैंने क्या किया है, दूसरे के लिए एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ वेव, लेकिन नाउ सी यहाँ पे भी तुम्हारा एम्पलीट्यूड यही है, प्लस है और ये माइनस है, यानी ये डिस्टेंस सेम रखा मैंने स्टूडेंट्स। ये फिर मेरा टाइम पीरियड यहाँ पे कैपिटल टी है, ये मेरा टी हो जाएगा और ये मेरा 2t हो जाएगा, तो ये मेरा लैम्बडा होगा और ये मेरा 2 लैम्बडा। ना मुझे बताओ स्टूडेंट्स किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो तुम बोलोगे सर यहाँ का ये वेव, ये है 1 लैम्बडा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव, कैन आई से इट्स इक्वल टू लैम्बडा। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस वेव, तुम बोलोगे सर दिस इज 1 लैम्बडा and this is 2 lambda, so what is the distance covered over here, 2 lambda students, यानी इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, अगर इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। हाँ स्टूडेंट्स, Yes. माय डियर, दोनों को कंपेयर करो, ये लैम्बडा था, ये डिस्टेंस हुआ, ये देखो ये लैम्बडा, ये डिस्टेंस, तो स्टूडेंट्स इसका डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, ये कम है। लुक एट दिस डिस्टेंस ना, दिस इज लैम्बडा एंड लुक एट ओवर हियर, लैम्बडा कम हो गया ना, wavelength in the first case is greater, in the second case is कम, जिसका wavelength कम उसका frequency ज्यादा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे wavelength कम है, ज्यादा नहीं है, wavelength का मतलब क्या, distance covered by a wave। what is frequency, number of oscillations per unit time, तो मुझे बता सकते हो इसका frequency कितना है, what is the frequency of this, इसका calculate कर सकते हो। चलो, how many oscillations are there, 1 oscillations। अगर सपोज मैंने टाइम दिया है 10 सेकेंड, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, टाइम दिया है मैंने 10 सेकेंड्स, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, तो कहने से ये 10 सेकेंड्स होगा और ये 20 सेकेंड्स होगा क्योंकि ये 2t है, एग्रीड। Yes, sir. How many waves do you see, can I say one crest and one trough, so I could see only one wave, what is the time, 10, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फर्स्ट वेव के लिए, 0.1 हर्ट्ज, आया ना। हाँ. सेकेंड के लिए क्या होगा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द सेकंड वन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, हाउ मेनी आर देयर सर, वन क्रेस्ट वन ट्रफ, वन क्रेस्ट वन ट्रफ, हाउ मेनी वेव्स आर देयर सर, देयर आर टू वेव्स, हाउ मच इज द टाइम टेकन इन दिस केस, 20 seconds. are you getting it? So now in this case how much is the time taken we consider is the number of oscillations, are you getting it, we consider, and how much time, in time 20 seconds we consider, so there are two waves taking place in 20 seconds we consider, so what's the answer in this case, frequency, yeah. 0.2 hertz. Yes, in that case, are you getting it? यानी अगर तुम देखोगे तो number of oscillations per unit time, are you getting it? यानी अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा wavelength तुम्हारा देखो और यहाँ पे wavelength देखो, यहाँ पे shorter wavelength, यहाँ पे frequency ज्यादा होगी, यहाँ पे frequency कम है, inverse variation, are you getting it? Yes. So students do keep in mind that frequency and wavelength have both kind of variation, students, inverse variation, ये ध्यान में रखना students, okay? So now when you speak about it, number of oscillations per unit time, okay, is called as frequency, and the distance covered by the wave is called as a wavelength. मैं सिर्फ values erase कर रहा हूँ students, it's only that part. लेकिन ये ध्यान में रखना, frequency and wavelength are inversely, जिसका wavelength ज्यादा होगा students उसका frequency कम होगा, और जिसका wavelength कम होगा उसका frequency ज्यादा होगा, number of oscillations will be more. Why do people come to their comfort? तो उनको मूड आता है जब ये आते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अंदर ले ले मीटिंग में, हाउ इज इट पॉसिबल? सर आपका जो लेक्चर था वो बहुत सारे मतलब हमें बताया ही नहीं था। अच्छा, तुम लोग को बताया ही नहीं था लेक्चर है? नहीं सर। Nice, sir.
तो तुम्हें टाइम टेबल में नहीं दिया है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, मैथमेटिक्स का क्लास था सुबह और वो उन्होंने कल ले लिया ना दीपक सर ने, तो फिर आज का कुछ नहीं बताया था। स्टूडेंट्स इसको समझना होगा ना, तो इसको हम ऐसे समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ का टाइम पीरियड जो होगा ना, लेट अस से हम टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखते हैं स्टूडेंट्स, फिर फ्रीक्वेंसी को मैच करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा क्लियरली। अगर मैं यहाँ पे 10 सेकंड्स लूंगा, यहाँ पे भी 10 सेकंड्स लूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ऑसिलेशंस, अगर मैं यहाँ पे 10 सेकंड्स लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये पूरा टाइम को मैं 10 सेकंड्स लेता हूँ, इसको भी मैं 10 सेकंड्स ही लेता हूँ, लेट मी टेक इट इन दिस मैनर। तो यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो ये 0.1 हर्ट्ज होगा। यहाँ पे कितना होगा, 2 वेव्स, 0.2 हर्ट्ज, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान में रखना, इनवर्स वेरिएशन। एग्रीड स्टूडेंट्स? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, are you clear? यस सर। Now please pay attention friends. The last part we can see, यानी ये ध्यान में रखना, amplitude, maximum displacement of a particle on either side from its mean position, path length, distance between two extremes, time period, time taken by particle to complete one oscillation, frequency, it's a number of oscillations per unit time, wavelength, distance covered by a wave in periodic time t, or distance between two crests or two troughs, distance between two compressions or two rarefactions, उसको हम बोलेंगे wavelength. Wave velocity is a distance covered by the wave per unit time, formula v is equal to f lambda, और frequency and wavelength inverse variation. कोई बता सकता है phase का मतलब क्या है? What exactly phase? तो simple मैं बोलूंगा state of oscillation. ये सबसे important ये है students 12th standard के लिए सबसे important state of oscillation or vibration of particle. Anybody can tell me what exactly mean by the term phase? Students speaks about state of oscillation or vibration. इसका मतलब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कोई भी पार्टिकल जब भी ऑसिलेट करता है ना स्टूडेंट्स, तो उसका फेज का मतलब वो कितने कितने दूरी पे है मीन पोजीशन। अभी सपोज मैंने पार्टिकल को यहाँ से शुरू कर दिया स्टूडेंट्स, तो उसका इनिशियल फेज 0 है, व्हिच इज मेजर्ड इन रेडियंस। यानी अगर मैंने 0 रेडियंस बोल दिया तो पार्टिकल कहाँ की तरफ है, तो बोलोगे सर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। अगर पार्टिकल 90 डिग्रीज आया है, यहाँ पे मैंने 90 डिग्रीज बता दिया, तो पार्टिकल कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम। यानी अभी यहाँ से पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, तो बोलोगे सर 90 डिग्रीज अगर इसका फेज है, 90 डिग्री या पाई रेडियंस, तो वेयर इज द पार्टिकल गोइंग टू गो, तो सर यहाँ से पार्टिकल नीचे की तरफ ही जाएगा। तो वो क्या बताता है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। कितना नीचे जाएगा स्टूडेंट्स, कितना नीचे जाएगा, इक्वल टू ए। कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ पे आने के लिए, t/4। उस टाइम पे वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगा, λ/4। क्योंकि स्टूडेंट्स ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। स्टूडेंट्स इसको अगर मैं बोलूं t/4 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 t/4, λ/4 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 λ/4, ये टोटल टाइम t हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस लैम्बडा भी होगा। तो व्हाट इज द टोटल फेज, 360 डिग्रीज। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से शुरू होता है पूरा वापस यहाँ पे आता है 360, यहाँ से शुरू होगा वापस यहाँ पे आएगा 360। देखो ये 90 हुआ, ये 180, यहाँ पे आएगा तो 270 डिग्री, और यहाँ पे आ गया तो 360 डिग्री। Got the phase? Friends, did you get the phase? Phase का मतलब क्या, state of oscillation or vibration of a particle. If a particle has a phase of 90 degrees, उसका मतलब है the particle is at positive extreme.
If it is 180, the particle is at mean. If it is 270, particle is at negative extreme. If it's 360, particle is again at mean position. So what exactly phase speaks about? State of oscillation or vibration of a particle. Is this clear, students? Yes, sir. Can I erase this entirely, students? पूरा erase कर दूं मैं? Sir, 2 minutes. Who's this? Sir, ये switch कौन? me. अरे तुम लेक्चर्स में तो थे ही नहीं. हाँ सर, लेट जॉइंट हुई. हाँ? सर लेट जॉइंट हुई. क्यों? सर एक्चुअली पता नहीं कनेक्टिविटी पूरा कनेक्टिंग ही दिखा रहा था, फिर 2 बार जूम डिलीट करके वापस किया सब पूरा. लेकिन फोन किया घर पे तो बोला कि सो रहे थे, लेट उठे. नहीं मैं सर, मेरे को मैसेज मिल गया था ऑलरेडी. ये स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर रहे थे वो. नहीं सर, मेरा एक्चुअली पता नहीं कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम था. लेकिन यहाँ पे तो बताया गया कि सो रहे थे, लेट उठे. सर कॉल नहीं आया था कुछ. तुम्हें नहीं पता ना. वी डोंट इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स. इट्स नॉट आस्क्ड टू स्टूडेंट्स. सर तो ऐसे कैसे कि सो रहे थे. स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है. जिसने देखा उनको उनको पूछा जाता है. बट मैं लेक्चर कर रही थी सर, कनेक्टिंग दिखा रहा था. अच्छा, कनेक्ट. क्या टेक्नोलॉजी है ना. See students, see the dedication of Sujini. She was really striving hard. 7:30 से वो connecting के लिए आ रही थी. She was ready to come till 7:30, and finally she is entering into the classroom at 9 o'clock, whatever it is. 1.5 घंटे सर मैं तक. 8:45 से हूँ. क्या? 8:45 से हुई मैं. 8:45 से no, I just kept you out for 3 minutes, not more than that. Okay, not more than that. मैं जब ये definitions कर रहा था ना, जब तुम आए थे पाथ लेंथ पे, फ्रीक्वेंसी पे तुम्हें एंटर करवाया. ओके. नहीं सर, I was in the definitions. पूरा वेवलेंथ बाकी था, वेव वेलोसिटी बाकी था, फेज बाकी था. ओके. मैं एंटर यहाँ पे आपने दिखाया ना बाय वेव, ये नीचे वाला, तभी आई मैं. फाइन. यू आर ऑलवेज, स्टूडेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट. स्टूडेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट. वेरी डिड आई से सर इधर? सच्ची में. हाँ फाइन, तो वेरी राइट. चलो चलो ना. 45 मिनट्स से शी वाज आउटसाइड. सी स्टूडेंट्स आर डेडिकेशन. आई थॉट, मैं तो 1.5 घंटे तक तुम्हें बाहर रखा, मैं ट्राई कर रहे थे. मैं तो तुम्हारा एफर्ट्स और इंक्रीज कर रहा था टाइम. ओके सर स्टूडेंट्स, नहीं, शी डिड मतलब पुट इन आप एफर्ट. ज्वाइन नहीं करे थे ऐसा नहीं था, मेरे फोन में प्रॉब्लम था, जूम नहीं में कुछ पता नहीं नहीं कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या होगा? 2-3 बार जूम डिलीट करके किया मैंने नहीं, पूरा. नहीं, I'm not saying about that. I'm telling you dedication time. Students, her dedication time was not for 1.5 hours. Her dedication time to enter into the lectures was 1 hour 15 minutes. Okay. I thought so. Okay, her dedication was for 1.5 hours. Like now, I'm sorry for it. It's 1 hour 15 minutes. She was dedicated. And then to also somebody's patience. Students value the patience of the students. Okay. You should try to learn something from Sujini. She must have that much amount of patience to hold herself. कोई दूसरा स्टूडेंट होता तो कब का निकल गया होता. ये हो ही नहीं रहा, सरेंडर कर देते. मालूम है, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाई नहीं करनी होती है वो. मैं पहले 1.5 घंटा बोला, इट्स माय मिस्टेक. बट शी वाज ट्राइंग फॉर 1 hour 15 minutes. स्टूडेंट्स सोचो, समझ रहे हो 1 hour 15 minutes का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट अ जोक. कंसिस्टेंटली स्क्रीन के सामने बैठना है, मीटिंग के अंदर एंटर होना है, कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है. स्टूडेंट कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है उस टाइम पे. फिर भी उसने फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, पेशेंस रखा, एकदम कूल हेड रखा.
So students, in order to be successful in life, students, you should have lots and lots of patience. ये ध्यान में रखें. जितना तुम patiently wait करोगे, उतना ही तुम्हें success मिलेगा. At the end of it, Sujini got the success to enter. और सिर्फ मेरा टाइम था स्ट्रगल का, उसका 1.5 hour, लेकिन अकॉर्डिंग टू her time was 1 hour 15 minutes. So I accept that she struggled only for 1 hour 15 minutes. I was thinking for betterment for her. Okay, students, can I erase it? Erase कर दो, students? Yes, sir. Okay. Students, where there is a will, there is a way. जिसको लेक्चर में आना होता है ना, वो पूरी शिद्दत से ट्राई करेगा और बाद में वो एंटर होके ही रहेगा. It's like that. और जिसको नहीं आना होगा वो रीजंस बनाएंगे. ये था, वो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, फलाना था, ढिकना था, फिर वो नहीं आते. वैसा है. जैसे कि पढ़ाई मुझे करनी है, मेरे को एग्जाम देनी है. इट्स लाइक दैट. ओके स्टूडेंट्स, बट नाउ ये जो फेस का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये फेस का कंसेप्ट में एक दफे वापस बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड वाज आई डिडंट हैव अ बोर्ड वर्क, लेकिन नाउ यू विल बी एबल टू गेट इट मोर इजीली. Students, मैंने तुम्हें बताया था students, what exactly mean by the term? I'm again putting the concept of phase, huh, students? Okay, students, phase का मतलब मैंने क्या किया था? What exactly I told you? State of oscillation. Or vibration of particle. यानी at given phase, we can get time instant. Am I getting it? We can get particle heading towards. We can get distance covered by particle. Time taken by particle. To cover distance. Distance covered by wave. ये सब कुछ कौन बताता है? फेज. फेज ये सब बताता है, इसलिए हमने मैंने क्या बोला? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. अभी इसी को समझने के लिए अगर मैं पूछूं व्हाट एग्जैक्टली अ वेव. अ वेव का मतलब क्या होगा? वन क्रेस्ट वन ट्रफ. हम ये समझते हैं स्टूडेंट्स, हम फेज का कंसेप्ट समझेंगे ट्रांसवर्स वेव के हिसाब से. ओके, लॉन्जिट्यूडल वेव से भी कर सकते हो, लेकिन उसका डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो हम पकड़ेंगे वन क्रेस्ट वन ट्रफ. So one wave is one crest, one trough. Can I say that is also equal to one cycle? हाँ या ना? हाँ students, क्या ये clear हुआ? अरे हाँ या ना तो बोलो. A wave is equal to one crest, one trough, which is equal to one cycle. क्या ये clear हुआ? Yes. अगर मैं यहाँ पे साइकिल ड्रॉ करता हूँ, साइकिल का व्हील ड्रॉ करता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हुआ, ये वर्टिकल वाई एक्सिस हुआ, ये सेंटर हुआ और ये साइकिल है. इसी को वेव फॉर्म में मुझे बताना है, तो मैं इसको क्या करूंगा? वेव फॉर्म में नीचे में ड्रॉ करूंगा. वेव फॉर्म, कौन से वेव के बारे में हम बात कर रहे हैं? ट्रांसवर्स वेव. ये तुम्हारा x होगा और ये तुम्हारा y होगा, ये ओरिजिन होगा.
ये तुम्हारा प्लस है और ये माइनस है और ये हो जाएगा पाथ लेंथ। अभी देखो स्टूडेंट्स, अगर मैंने बोला, ध्यान से सुनना, अगर मैंने कोई पार्टिकल दिया है P यहाँ पे, उसका मतलब है एग्जैक्टली ये X क्या बन गया मेरा, मीन पोजीशन, रेफरेंस लाइन। स्टूडेंट्स ये रेफरेंस लाइन, आई गेटिंग इट? पार्टिकल इज ऑन द रेफरेंस साइड वी कंसीडर। ओके, सो यहाँ पे उसी पार्टिकल को मैं यहाँ पे पकड़ूंगा एट मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स ये पार्टिकल को देखो और ये पार्टिकल को देखना साइमल्टेनियसली। जब ये पार्टिकल साइकिल में मूव करता है तो यहाँ से, सपोज अगर ये है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा, यानी पार्टिकल कहाँ पे चला गया? फिर पार्टिकल चला गया पॉजिटिव वाई के ऊपर, पॉजिटिव एक्सिस में। तो वही पार्टिकल यहाँ पे चला गया पॉजिटिव एक्सिस पे, तो वही पार्टिकल यहाँ पे आ गया प्लस से। उस टाइम पे व्हाट एग्जैक्टली द एंगल व्हिच इट हैज ट्रेस्ड, तो बोले से द एंगल ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल इज 90 डिग्री। देखो ना, पहले ये उसका पोजीशन वेक्टर था, अभी ये पोजीशन वेक्टर आ गया, तो एंगल ट्रेस 90 डिग्री। तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो व्हाट इज एंगल ट्रेस 90 डिग्री। अरे हाँ सर, अभी अच्छा ये है फेस क्या? यस। फिर पार्टिकल यहाँ से वापस अपनी जगह पे मीन पे आता है, वापस ये पार्टिकल अपनी जगह पे मीन पे आता है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फेस कवर्ड बाय द पार्टिकल? सर ये तो सेमी सर्कल हुआ, तो ये 180 डिग्रीज होगा, तो व्हाट इज द फेस? 180 डिग्री। फिर पार्टिकल मीन से, ये मीन पोजीशन पे, मीन से किस तरफ गया? नीचे की तरफ गया, तो नीचे की तरफ यानी कितना होगा? नेगेटिव एक्सट्रीम। तो यहाँ से पार्टिकल अभी किस तरफ जाएगा? नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे कितना फेज हो जाएगा? सर ये फेज हो जाएगा 270 डिग्रीज। अरे हाँ सर, ये तो 270 हो गया। नेगेटिव, लेकिन कहाँ की तरफ है? नेगेटिव एक्सिस पे है। फिर पार्टिकल कहाँ पे आ रहा है? सर पार्टिकल पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके अपनी जगह पे आ रहा है। तो जो पार्टिकल पूरा साइकिल कंप्लीट करके यहाँ से पूरा अपनी जगह पे आएगा, तो कहने से वापस कमिंग बैक टू मीन, कमिंग बैक टू मीन, वो कितना डिग्री होगा? 360। अगर ये पूरा पार्टिकल अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता, तो कहने से ये पार्टिकल अपना एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। क्या ये क्लियर हुआ? अभी पता चला फेस? अरे हाँ या ना तो बोलो यहाँ। Students, are you understanding? Students, are you getting Yes, it? sir. Yes, sir. sir. This is really testing patience. I don't understand that. Okay, students. अभी यहाँ पे देखो, अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम हुआ तो उसको कितना टाइम लगेगा? बोले सर उसको टाइम लगेगा T/4, है ना? तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ओवर हियर, यानी यहाँ से यहाँ पे T/4। व्हाट एक्जैक्टली डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल? डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज प्लस a। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव? यानी वेव इतना कवर कर दिया डिस्टेंस उसी टाइम में, तो λ/4। तो आ गया ना फेज। अगर मैंने फेज 90 डिग्री दिया, अगर मैंने फेज 90 डिग्री दिया तो क्या होगा? व्हाट इज द टाइम इंस्टेंट? T/4। पार्टिकल हेडिंग टूवर्ड्स, पार्टिकल यहाँ पे आने के बाद में हेडिंग टूवर्ड्स वेयर? मीन पोजीशन। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर दिस डिस्टेंस T/4, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव λ/4। Horizontal is the distance covered by wave or energy, and V is equal to F lambda। ये फॉर्मूला है वेव का, और ये पार्टिकल का डिस्टेंस है, पाथ लेंथ, ऊपर नीचे होता रहेगा। उसी को मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो ऐसा आ गया मेरा। तो ये देखो, ये T/4 होगा, ये कितना होगा? T/2 λ/2, ये 3T/4, ये 3 λ/4। गेटिंग इट? ये कैपिटल T, ये लैम्बडा। सो 1/4 हाफ 3/4। अगर मैं फेज रेडियंस में लिखूं तो ये कितना होगा? सर π/2 रेडियंस सर्कुलर, पाई रेडियंस पाई सर्कुलर, 3π/2 रेडियंस 3π/2 सर्कुलर, 2π रेडियंस, ये 2π सर्कुलर, that is 360 degrees।
अगर सपोज दो बंदे ने स्ट्रिंग लिया, स्टूडेंट्स दो बंदे ने स्ट्रिंग्स लिया, सामने रिजिड एंड को बांधा है और दोनों ने जर्क किया और दो पार्टिकल्स एक ही टाइम पे उसी पॉइंट पे आ गए। स्टूडेंट्स ये एक वेव फॉर्म है जिसका पार्टिकल पी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आया, दूसरा भी वेव फॉर्म है उसका पार्टिकल भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आ गया। वो क्यों है? तो कहना से P point particle P and Q, P and Q, what happens? Are in same phase. That means they are in same state of oscillation. उनका जो difference in phase होगा वो zero होगा। अभी suppose मैंने एक रोप लिया, स्टूडेंट्स रोप से मैंने जर्क किया तो वो पार्टिकल यहाँ पे आया, उसी टाइम मिलने से दूसरे पर्सन ने भी जर्क किया तो वो पार्टिकल एक्सट्रीम पे आया, तो दोनों पार्टिकल्स पॉजिटिव एक्सट्रीम है तो दोनों का सेम फेज होगा। अगर एक का पाई बाय 2 है तो दूसरे का भी पाई बाय 2 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन देम? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या बन जाएगा? 0। तो सेम फेज का मतलब क्या? अगर कभी कोई टीचर तुम्हें बोले दैट द पार्टिकल्स आर इन सेम फेज, दैट मींस दे आर इन सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, दैट मींस दे आर सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, that means the phase difference between them can be 0 or can be 2 pi also. Can be 0 or can be 2 pi. अभी देखो कैसे 2 pi? अगर ये वेव फॉर्म को मैं आगे और कंटिन्यू करता, स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन, यहाँ पे पार्टिकल को देखो और ये पार्टिकल को देखो। अगर सपोज मैंने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए होते वेव का, तो कैन यू टेल मी यहाँ का पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम वापस पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आ गया, तो कैन आई से ये पार्टिकल और ये पार्टिकल आर दे इन सेम फेज? यस, दे आर आल्सो इन सेम फेज। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? सो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लैम्डा होगा, टाइम पीरियड टी होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फेज? 2 पाई रेडियंस या 2 पाई सर्कुलर। ये देखो ये 1 पाई बाय 2 है, तो ये 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, इसका फेज कितना है? 5 पाई बाय 2, यानी एक का 1 2, तो ये पाई बाय 2 था, ये 5 पाई बाय 2 है, ये फेज 1, ये फेज 2। क्या दोनों पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है? यस, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है दोनों। तो व्हाट इज द चेंज इन फेज? phi 2 minus phi 1, 5 pi by 2 radians or circular minus pi by 2. What's my answer? 2 pi radians. आ गया? So they are in same phase. समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो पार्टिकल P है और यहाँ पे जो पार्टिकल Q है, they are in same phase. यानी सेम फेज का मतलब क्या होना चाहिए? इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 भी हो सकता है या 2 पाई भी हो सकता है। Is this clear to all of you all? Students, is it clear? Students, are you getting it? हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती मुंह से बुलवा रहा हो कि जबरदस्ती हाँ बोलो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दो रोप्स का एग्जांपल दिया, दो रोप साइमल्टेनियसली जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक ही रोप का एग्जांपल दिया। एक ही रोप में अगर तुम वेव करोगे तो कितने सारे क्रेस्ट और ट्रफ आएंगे? बहुत सारे आएंगे। तो अगर कोई पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है तो आफ्टर सम टाइम, कितने टाइम में, कैपिटल टी के बाद में दूसरा पार्टिकल भी वहां पे, जो अगर पार्टिकल होगा वो भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, लेकिन उसका फेस इससे अलग होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा दोनों में? कांस्टेंट रहेगा। यानी फेस कांस्टेंट कितने टाइम के बाद में आता है? हमेशा टी के बाद में आता है। ये भी ध्यान में रखना। फेस कांस्टेंट कितने डिस्टेंस पे होगा? हमेशा लैम्डा के डिस्टेंस पे होगा। और डिफरेंस बिटवीन द टू फेस हमेशा कांस्टेंट कभी होगा 2 पाई, कभी होगा 2 पाई, या तो वो दोनों पॉजिटिव एक्सट्रीम में हो या दोनों नेगेटिव एक्सट्रीम में हो। यस, दैट इज फेस डिफरेंस।
Okay, students. That is all for today. Next lectures will be continuing further ahead. But students, from today onwards, see to that you read the chapter carefully or ye dhyan mein rakhna, students. And very important, students, whatever problems, thing which you're learning, and I'm really, Sujini, I'm really thankful to Sujini that she has really made everybody of you all to feel proud of. Okay, so waiting and then entering inside, it's not a joke, students. Many students surrender. So something to learn from her today. Dedication, devotion, and determination. जिसके पास में ये 3 Ds होंगे, that person is really successful in life. And all these 3 are with Sujini. Okay, students, so please see to it the next time onwards, if any kind of glitches या कुछ होता है, so please don't just try to surrender yourself. Are you getting it? और next time ये revise करके आना. Okay, students? Yes, sir.